Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himlata Chandolia, class 8. Today we are going to complete chapter number 17 of class 8 science book, and that is the stars and the solar system. Class 8, we already had discussed very much about our solar system in our previous videos. Today we are going to discuss about the main members of our solar system. That means we are going to discuss about planets, isn't it? So everybody knows that we already had discussed how many planets are in our solar system. There are 8 planets. So we are going to discuss them one by one. Clear everyone? So the very first planet is planet Mercury, and in Hindi we call it बुध. ठीक है, हम इसको बुध भी कहते हैं. So students, the planet Mercury is nearest to the sun. Yes, ये sun के सबसे ज़्यादा करीब है और इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करना, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कवरी करना हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है. Clear everyone? So students, it is the smallest planet of our solar system. So a very important question, which planet is known as the smallest planet of our solar system? It is Mercury. Okay, class, because Mercury is very close to the sun, it is very difficult to observe it, as most of the time it is hidden in the glare of the sun. Yes, सूरज की चारों तरफ की जो चकाचौंध है, जो एक ग्लेयर है, ये हमेशा उसके अंदर छिपा रहता है. तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी कर पाना हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है. स्टूडेंट्स, हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द sunset. Okay, so however it can be observed before sunrise or just after sunset near the horizon. So it is visible only at the places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. अब समझ में आ गया? Student, a very important thing about the Mercury, that Mercury has no satellite of its own. जैसे अर्थ के पास अपना एक सैटेलाइट है, वैसे मर्क्यूरी के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है. Students, next planet is Venus. Yes, and it is the second planet of our solar system. Students, Venus is Earth's nearest planetary neighbor. Yes, ये हमारी पृथ्वी का पड़ोसी है. Clear everyone? Students, it is the brightest planet in the night sky. Yes, आप इसे early in the morning में east डायरेक्शन में भी देख सकते हैं और सनसेट के बाद आप इसे वेस्ट डायरेक्शन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज एंड इट इज़ जस्ट लुकिंग लाइक दैट. देखो कितना चमकीला है और ये इतना ही शाइनी आपको मॉर्निंग के टाइम सनराइज से पहले आपको ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा. यू कैन ईजीली ऑब्जर्व दैट इट इज़ द Venus. Clear everyone? Students, sometime it appears in the western sky just after sunset. Therefore, it is often called a morning or an evening star. But although it is not a star, it is a planet. Okay? फिर भी हम इसे क्या कहते हैं? Morning और evening star. Clear everyone? Student, Venus has no moon or satellite of its own like Mercury. समझ में आ गया? मरकरी के पास भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. ये रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, बल्कि हमारी जो पृथ्वी है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, like moon, the Venus also shows the phases. Have a look here. The Venus shows the phases just like the moon, like this. Clear everybody? अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट प्लैनेट, एंड दैट ब्यूटिफुल प्लैनेट इज आवर अर्थ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं
पृथ्वी। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट, अब इस प्लैनेट के बारे में हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है जो हमने पहले पढ़ रखी है, हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड planet of our solar system and Earth is the only planet in our solar system on which life is known to exist. क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो लाइफ के ओरिजिन के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही फेवरेबल है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the earth. Clear everybody? These include just the right distance from the sun. Very important point. देखो, हमारा अर्थ का सन से एक right distance है. That's why it is having the right temperature range. The presence of water. Clear everybody? Very first कि हमारा यहाँ पर सन से जो डिस्टेंस है वो बहुत सही है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर रेंज है वो भी क्या है? सही है, राइट टेम्परेचर रेंज. सेकेंड पॉइंट. थर्ड वन इज दैट कि प्रेजेंस ऑफ वाटर. फोर्थ वन दैट इट इज द suitable atmosphere. And the fifth one that we are having a blanket of ozone. और ओजोन के बारे में हमने डिस्कस करेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया और हम हमारे आने वाले चैप्टर्स में भी इसको डिस्कस करेंगे. ओजोन इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर in our atmosphere which is protecting us from the harmful radiation of sun. Clear everybody? So all these 5 points makes earth suitable for the existence and continuation of life. Clear everybody? समझ में आ गया? Students, we must take special care to protect our environment so that life on earth is not disturbed. इसके लिए हमें ओवरऑल अर्थ की केयर करना बहुत ज़रूरी है. अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उन्हें सेव करने की ज़रूरत है, उन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, the earth has only one moon. Have a look. Yes, हमारी अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून. From space, the earth appears blue-green due to reflection of light from water and the land mass on its surface. Have a look. ऐसे दिखती है हरी और नीली. ज़्यादा नीला कलर हमें क्यों दिखता है? Because हमारी अर्थ पे maximum amount of water present है. Clear everybody? So it is looking like blue-green from the space. Clear everyone? Students, the earth revolves around the sun in 1 year. और 1 year का टाइम पीरियड कितना होता है बच्चा? 365 1/4 days. Clear? So, but earth rotates on its axis in 24 hours. इसलिए हमारे यहाँ पे एक दिन होता है 24 आवर्स का और 1 ईयर होता है 365 1/4 days का. Clear everyone? Students, do you know why the season changes on the earth? Yes, हमारे यहाँ मौसम कितने अलग अलग हैं. कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी मॉनसून है, कभी बसंत है. Isn't it? So ये जो हम सारे सीज़न हमारी अर्थ पे देखते हैं इनका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? there are 2 factors due to which season changes on the earth. And what are those factors? First is the axis of rotation of the earth is inclined vertically at the angle of 23.5 degree. Clear everyone? इसको हम 23.5 भी लिख सकते हैं. क्लियर? और ये हमने हमारे सोशल स्टडीज़ के चैप्टर में भी पढ़ा है.
Clear everyone? So what is the first reason? First reason is that बच्चा कि the axis of rotation of our earth is inclined vertically और वो कितने डिग्री के एंगल पे है? It is at the degree of 23.5 और 23 हम half an degree. Clear everyone? The second very important reason is that due to the elliptical orbit of the earth around the sun, the earth's and the sun distance is not always equal. देखो this is the elliptical orbit, ठीक है, और इस elliptical orbit की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ है ना इसका डिस्टेंस सन से हमेशा सेम नहीं रहता है. कई बार ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है और कई बार ये डिस्टेंस कम होता है बिकॉज इट इज़ नॉट अ सर्कुलर पाथ, इट इज़ एन elliptical orbit. Clear everyone? So students, the earth is not always at the same distance from the sun. Clear everyone? समझ में आया? Students, it is because of tilt of the earth's axis. हमने पोल स्टार में भी पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ का एक्सिस है it is like this. It is not the vertical straight vertical, it is inclined vertical at the degree of 23.5. Clear everyone? समझ में आ रहा है? That the position of northern and the southern hemispheres of the earth keep on changing around the years और इसीलिए लाइफ अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है. क्लियर एवरीवन? अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट एंड नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स. और जैसे ही हम मार्स को याद करते हैं हमें मंगल ही मंगल याद आता है. यस, इट्स नेम इज मंगल इन हिंदी एंड यू रिमेंबर दैट मंगलयान. ठीक है, सो इट इज रिलेटेड विद दिस. Students, this Mars is the reddish color planet. Why it is reddish in color? Because it is said that scientists discovered that ki on Mars there are the maximum amount of iron particles and iron gives it the reddish color. Okay, students, Mars appears slightly reddish and therefore it is called the red planet. Have a look. ठीक है, वो चटक लाल नहीं होने वाला. ठीक है, it resembles like the red one. Okay, the Mars has some natural satellites. Okay, अब देखो satellites का sequence start हो गया है. अर्थ के पास सैटेलाइट था, मार्स के पास भी सैटेलाइट है. इट इज हैविंग टू सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, डीमोस एंड फोबोस. क्लियर एवरीवन? याद कर लीजिएगा नाम. स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड विथ मंगल एंड दैट इज मार्स. स्टूडेंट्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ISRO, Indian Space Research Organization launched India's first Mars orbiter mission and name is Mangalyaan on November 5, 2013. Yes, in 2013 on November 5th, India has launched very first Mars orbiter mission जिसका नाम था मंगलयान. क्लियर एवरीवन? और इस पर एक मूवी भी आई हुई है. ओके, तो देख लीजिएगा. स्टूडेंट्स, इट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन September 24, 2014. It was a great achievement. Clear? It is a remarkable achievement for us. Students, with this, India became the first country in the world to do so in its first attempt. Clear everyone? समझ में आया how big it is? Students, अब हम बात करते हैं हमारे next planet की. अब मार्स के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? Yes, it is Jupiter. Jupiter means बृहस्पति. Okay, and it is the largest planet of our solar system. Clear everyone? It is so large that about 1300 Earths can be placed inside this giant planet. सोचो इसके अंदर 1300 हमारी अर्थ आ सकती है. How much big it is.
कितना बड़ा मतलब है ये planet. Students, however, the mass of Jupiter is about 318 times that of our Earth. It is the mass of this planet. Clear everyone? Students, have a look. हमें यहाँ पर इसमें rings भी नज़र आ रही हैं. Clear? समझ में आ रहा है? But these rings we are not visible outside here, but it is having rings here. Clear everyone? Students, it rotates very rapidly on its axis. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर फिर दिन भी कैसा होता होगा, छोटा होता होगा, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है. Jupiter has large number of satellites. Yes. It also has faint rings around it. Yes, have a look. These are the rings. Clear everyone? We can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. Okay, समझ में आ गया? Students, if we observe it with the help of a telescope, you can also see 4 of its large moons. Have a look here. 1, 2, 3, 4. ये इसके सबसे बड़े 4 मून्स हैं अगर हम इसको टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं तो. क्लियर एवरीवन? और हमें ये आसमान भी दिखाई दे सकता है बहुत ब्राइट. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट, द नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न और हिंदी में शनि, जिससे सब डरते हैं. अच्छा, अब ये जो सैटर्न है, it is just beyond the Jupiter, which appears yellowish in color. Okay, what makes it unique in the solar system? That it has beautiful rings. Have a look here, class 8. How beautiful it is, है ना? ऐसे लगता है जैसे ना किसी और मतलब यूनिवर्स से कुछ और आया है. समझ में आ रहा है? जैसे अपन ने मूवीज़ में देखा है ना, वो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, उड़न तश्तरियाँ आई हैं कहीं से. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट बिकॉज इट इज़ हैविंग द ब्यूटिफुल रिंग्स एंड दैट मेक्स इट यूनिक. ओके, दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज. सो इसको देखने के लिए हम किसको यूज़ में लेंगे? वी विल यूज़ द टेलीस्कोप. Students, Saturn has a large number of satellites, and if I'm not wrong, they are near about 27 something. Okay, one interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planet. और ये इतना least density वाला planet है कि अगर इसकी जो डेंसिटी है, इट इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर. और इसीलिए बूझों को एक है ना शरारत सूझी, अगर ये इतना ही लेस डेंस है वाटर से, तो इसका मतलब ये पानी में तैर भी सकता है. क्लियर एवरीवन? अब ये पानी में तैर सकता है या नहीं तैर सकता, दैट वी विल डिस्कस इन आवर हायर स्टडीज. सो वी कैन से दैट इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. Clear everyone? Student, the next planet is Uranus. Clear everyone? Uranus. अब बच्चा, ये जो यूरेनस है और यूरेनस के बाद का जो नेपच्यून है, ये हमारे सबसे दूर वाले प्लैनेट हैं सन से. Clear everyone? Student, just have a look. It is looking like this. इट इज़ अ कोल्ड प्लैनेट. ऑब्वियस सी बात है, नेपच्यून और ये जो प्लैनेट है, ये कोल्ड प्लैनेट क्यों है? बिकॉज इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम द सन एंड इट इज़ बिगर दैन अर्थ. लाइक सैटर्न एंड जुपिटर, इट ऑल्सो हैज़ rings. Have a look. Okay, it also has many satellites. It can be seen with the help of large telescope because they are so far away from us. Clear everyone? Students, like Venus, Uranus also rotates from east to west. और हमारा अर्थ किधर रोटेट करता है? From west to east. The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. Have a look how much tilted its rotational axis. So this is the simple Uranus in its orbital path. Clear everybody? Students, अब एक चीज़ और, just because of that orbital motion, as a result in its orbital motion, it appears to roll on its side.
क्लियर। और ये कैसा लगता है कि ये रोल कर रहा है अपनी ही साइड पे। देखो, जब भी कोई चीज़ अपनी एक्सिस पे घूमती है ना, तो वो ऐसे घूमती है, बट इसका जो रोटेशनल एक्सिस है वो इतना ज़्यादा टिल्टेड है बच्चा, कि ये क्या लगता है, ये अपीयर होता है कि अपनी ही जगह पर लुढ़क रहा है, रोल कर रहा है। Clear everyone? Students, let's discuss the next planet of our solar system, and this is the 8th planet, that is Neptune. Students, Neptune is the 8th planet in terms of its distance from the Sun. Have a look, student. It appears like in blue color. Clear everyone? Neptune's bluish appearance comes from the methane gas in its atmosphere, which has a blue color. Clear everyone? What's the reason behind it? Because in its atmosphere there is methane gas, and which gives its blue color. Okay? Its atmosphere also contains hydrogen, helium and water, and Neptune has 13 moons. Clear everybody? So students, all the planets are clear. There are 8 planets in our solar system. Students, the first 4 planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, are much nearer the Sun than the other 4 planets, and that's why they are called the inner planets. समझ में आया? 4 planet कौन कौन से? Mercury, Venus, Earth and Mars. ये 4 planets सन के करीब हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? Inner planets. बच्चा, inner planets have very few moons. This is the specific characteristic. Clear everyone? Students, the planets outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are much farther off than the inner planets, and that's why they are called the outer planets. अब outer planets में कौन कौन से planets आ गए? Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Clear everyone? They have a ring system around them that we already had seen. Clear? जब हमने इनको discuss किया था. The outer planets have large number of moons. और जो inner planets हैं उनके पास number of moons comparative कम होते हैं. Clear everyone? अब हम discuss करते हैं student some other members of the solar system. There are some other bodies which revolve around the sun. They are also the members of our solar system. Planets को हमने discuss कर लिया. Clear everyone? हमने हमारा जो अर्थ का सैटेलाइट है मून, उसको भी डिस्कस कर लिया. इनके अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं. व्हाट आर दे? वेरी फर्स्ट, एस्टेरॉइड्स. ठीक है, हमें पता है एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. Clear everyone? Students, there is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter. Important point. This gap occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. और ये objects क्या कहलाते हैं? They are called asteroids. Clear everyone? समझ में आ गया? Students, have a look on this diagram. This is the symbol showing our planets till Jupiter. Okay? अब आप यहाँ देखो बच्चा, ये हमारा मार्स है और ये हमारा जुपिटर है. इन दोनों के ऑर्बिट्स के बीच में there are some particles. Clear? And these particles are asteroids. Clear everyone? And they form here the asteroid belt. समझ में आ गया? What is asteroid? Okay? Student, next है comets. Comets भी हमारे सोलर सिस्टम के members हैं. Okay? Comets are also the members of solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbit. Highly elliptical. Clear everyone? However, their period of revolution around the sun is usually very long. समझ में आ गया? Students, a comet appears generally as a bright head
with a long tail. Have a look. देखो, long tail and bright head. समझ में आ रहा है? The length of the tail grows in size as it approaches the sun. The tail of a comet is always directed away from the sun. ठीक है? Clear everyone? Have a look here. समझ में आ रहा है? Student, many comets are known to appear periodically. Yes, कि एक टाइम पीरियड के बाद वो दिखते हैं. समझ में आ रहा है? One such comet is Halley's comet. Clear? This is the famous comet which appears after nearly every 76 years. Yes, समझ में आ रहा है? हर 76 years के अंदर ये जो आपका हैलीज कॉमेट है ये रिपीट होगा. ये पीरियडिकली आएगा. 76 ईयर्स में आ गया, उसके बाद जब 76 ईयर्स कंप्लीट होंगे फिर आएगा, फिर उसके बाद 76 ईयर्स कंप्लीट होंगे तब आएगा. ओके, इट वाज लास्ट सीन इन 1986. सो यू कैन कैलकुलेट, अगर ये लास्ट 1986 में दिखा था तो अब ये नेक्स्ट टाइम कब दिखेगा. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द 76 years. Clear everyone? Students, there are so many superstitions which are related to the comets. So let's discuss them. Superstitions about the comets. Some people think that comets are the messengers of disaster such as war, epidemics and floods. Yes, कुछ लोग ये मानते हैं कि जब भी कुछ गलत होना होता है तब ये कॉमेट्स दिखाई देते हैं. अब गलत कैसे हो सकता है भाई? वॉर हो सकते हैं, ठीक है, बाढ़ आ सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम एज अ डिज़ास्टर कंक्लूड करते हैं. क्लियर एवरीवन? बट दीज आर ऑल मिथ एंड सुपरस्टिशंस. अंधविश्वास है ये हमारा. ठीक है? Appearance of a comet is a natural phenomena. We have no reason to be afraid of it. Yes, कोई रीज़न नहीं है हमारे पास इनसे डरने का. बट ये बहुत पहले की बातें हैं जब हमने ज़्यादा डिस्कवरी नहीं की थी, जब हम ज़्यादा अवेयर नहीं थे. बट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर अवेयर दैट कि इनसे कोई भी हमें खतरा नहीं है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं मिटियोर्स और मिटियोराइट्स. देखो, मिटियोर्स क्या होते हैं? एट द नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर, द मून इज नॉट हियर, you may sometimes see bright streaks of light in the sky, जिसको हम नाम देते हैं तारा टूटने का. क्लियर एवरीवन? देखो, ये क्या है? ये है मिटियोर. Clear everyone? Student, these are commonly known as shooting stars, although they are not stars. वैसे ही जैसे वीनस क्या है? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, but it is not a star, it is a planet. Same here, we are commonly call them shooting stars, but they are not the stars. They are called meteors. Clear everyone? A meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. At that time, it has a very high speed. Clear everyone? Students, the friction due to the atmosphere heat it up and it glows and evaporates quickly. आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा है? वो अचानक से दिखता है और अचानक से गायब हो जाता है. This is the reason here. Clear? Why वो हमें नज़र आता है और वो क्यों फटाफट से गायब हो जाता है? Because ये एक बार चमकता है उसके बाद evaporate हो जाता है जल्दी से. Clear? Students, that is why the bright streak lasts for a very short time. कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ 2-3 सेकंड्स के लिए दिखता होगा ज़्यादा से ज़्यादा. ओके? Some meteors are large and so they can reach Earth before they evaporate completely. और तब हम क्या करते हैं? हम हमारी इच्छा मांगते हैं, हमारी विश पूरी कर दो. अरे तारा टूट रहा है, अपनी विश मांग लो. Isn't it? Students, sometimes the body that enters the Earth is called meteorite. The body that reaches
द अर्थ, जब हमें अर्थ पे मिल जाते हैं तब हम इन्हें कहते हैं meteorite. And meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. Yes, कई बार ये टूट के नीचे भी गिरते हैं अर्थ पे, और तब हमारे साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि लिटरली हमारा जो सोलार सिस्टम है ये किन किन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है. स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं मीटियोर शावर्स. देखो, शावर्स सब बच्चों ने देखे हुए हैं. अब सोचो मीटियोर्स का शावर हो तो कितना ब्यूटीफुल लगता है. स्टूडेंट्स, व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कॉमेट, swarms of meteors are seen. These are called, or these are known as meteor showers. Clear everyone? Some meteors showers occur at regular interval of each year. समझ में आ गया? देखो, like that comets, कुछ कॉमेट्स ऐसे होते हैं जो पीरियडिकली आते हैं. तो लाइक इन द सेम मैनर देयर आर सम मीटियोर शावर्स विच अकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ अ ईयर. समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. हमारा अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है एंड दैट इज मून. बट right now, or before that, we also heard about the artificial satellites. And what are artificial satellites? They are man-made. Clear? They are revolving around the orbit of earth for our purposes, for telecommunication, for remote sensing, isn't it? So students, there are a number of artificial satellites which are orbiting the earth. You might wonder how artificial satellites are different from natural satellites. Very first, that artificial satellites are man-made. Clear everyone? They are launched from the earth. हम उनको अर्थ से ही छोड़ते हैं. ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि इसरो बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करता है. They revolve around the earth much closer than Earth's natural satellite, the moon. Clear everybody? India has built and launched several artificial satellites, and very famous and the very first one was Aryabhatta, was the first Indian satellite. Very important question. India का first artificial satellite कौन था? आर्यभट्ट. Clear everybody? और हमें पता है हमने इनका नाम आर्यभट्ट क्यों रखा था? Because Aryabhatta was the very famous astronomer in India in ancient time. Clear everyone? Student, have a look. These are some artificial Indian satellites. अब कौन कौन से satellites हैं? Learn their name. Some other Indian satellites are NCERT, IRS, Kalpana 1, EduSat, etc. Artificial satellites have many practical applications. Clear? They are used for forecasting weather. बिल्कुल आपको मौसम की चेतावनी मिलती है ना कि गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, मछुआरों को कह दो आज समुद्र की तरफ नहीं जाएं. ठीक है? सो व्हाट इज दिस? दिस इज द वेदर फोरकास्टिंग. ट्रांसमिटिंग टेलीविजन. यस, आज हम सब टीवी देखते हैं, अपने अपने फेवरेट चैनल्स को प्ले करते हैं, एंड फॉर ऑल दैट वी आर हैविंग DTH. वो छतरी है हमारे पास, और पुराने ज़माने में एंटेना होता था. दैट इज़ द ट्रांसमिटिंग टेलीविजन पर्पस. एंड रेडियो सिग्नल्स. यस, ठीक है. फॉर ऑल दीज वी आर यूजिंग आर आर्टिफिशियल satellites. They are also used for telecommunication and remote sensing. So I hope what are the uses of artificial satellites, what are the different names of Indian satellites, it is clear. Students, with this topic, this chapter completes here. In the coming section, we will discuss the exercise part of this chapter. Till then, you have to revise what we learned in our previous videos and today also. Take care of yourself and thank you everyone.